Sip Girish, Sip Ashok, Sip Komal, Sip Krishna, Sip Dasi, Sip Sanjay, Sip Anjali, Sip Reena, Sip Shair, Sip Premchandji, Sip Bliko, Sip Ahem Sip. Uh, Welcome to this call. And we are on a Sunday evening session, open session. Open session means you can ask any question. Why are we on this call? What is the purpose of this call? Why should I ask AiR? Why should I pray to God? What is happiness? How can I be happy? How can I overcome misery and sorrow? What is the purpose of life? Who is God? Where is God? What is God? How did I come to earth? Why did I come to earth? Where will I go after I lose my breath? What happens after death? Does God live in the sky? Which God is God? Does God control our life? Is there luck? Is there destiny? If I start writing questions, there are 200 questions. 200 questions which have no answer. And it is for us to find the answers to all the questions of life. And we have got this Sunday session only to get answers. So on Sunday, I just pick my coffee and I relax and I ask you to question me anything that you like. For me, Sunday session is a coffee session. So can I answer any of your questions? Ruth, Anu, and Krishna. Shivoham, Guruji. Shivoham. Guruji, how do we transcend karma? How do you transcend karma? Just like a plane takes off. You know how the plane takes off? How does the plane take off the ground? How does it leave the ground? So you also have to leave karma. And how will you leave karma? You will leave karma by leaving on the tarmac, on the runway, the body, the mind, and the ego. On the tarmac of life, you just take off. Leave behind the body which you are not. I am not the body that will die. I am not the mind I cannot find. I am not the ego that says I. It's a lie. Finished. Whose karma then? You make it look so difficult. How can I transcend karma? Karma does not belong to you. Why are you clinging to karma? Why are you clinging to karma? Don't cling. Leave it now. It's not yours. Yes, sir. Why are you going on saying my karma, my karma, my? We cry because we say my. If you don't say my, then you won't cry. And you say my because of I. And who is this I? I am not I. Then who am I? That's all. It's very simple. And either you can be, some people want to happen by dancing. Ah, da, 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 jing, chak, jing, chak. Some people want happiness like that. And after they come back, they say, headache hai yaar, bahut sar mein dard hai. Then they don't reach that state of eternal bliss that comes from peace, that comes from purpose. Like that, there is ignorance, there is avidya. See, you are the divine soul. To realize this is your goal, why the complication? Once you're done, you are free now from karma. Okay, Krishna. Krishna, Komal. Yes. Coffee session today. Ah. Yeah. Shivoham, sir. Yes. Sir, you always say, or we पहले हमको लगते थे कि we were seeing God outside, and now we have to experience the divine within, right? Yes. So, Where did but she go? then you always. Ah. So, Continue. but you always say, but this is not an experience. आप बोलते हैं कि लेकिन ये experience नहीं है. फिर तो क्या है ये आत्मा? What is it? If it ये is तो मैं not an experience. 100 बार अपने गुरु से पूछा. I experienced God. He said, no, now you have to realize God. But I experienced God. He said, no, you have to realize God.
So is realization not an experience? It is beyond an experience. All those who experience don't realize, but all those who realize experience. Tell me what you understood. All those who experience don't realize. For example, when I was experienced, I told my guru, ye chanda, ye tare, panchi paudhe sare, ye chanchal hawa, भोले ये बनाया, इसमें वो समाया है उनकी कृपा. I used to experience God everywhere, but I had not realized God. Experiencing is a preliminary step of realizing. Suppose you experience God in the wind that blows, the water that flows, the sun that glows. You experience God, but you don't realize that is God. When you realize, then you also experience, and you realize that is God. Now you ask your question, see whether it makes sense what you're asking. Did I answer? Yeah, you answered, but हमारे stage में रह के unless we realize this goes above our heads. So my question to you is, हमारे इस stage में, when we have not realized, how should we visualize the divine soul? That we, अभी हमको पता है कि we are the divine soul, but how should we, for example, when you said the law of attraction, how should you be visualized? Do you doubt electricity in a bulb? Oh, sorry. Yeah. Do you doubt electricity in a bulb? I don't doubt. You know that song? Did I sing the song for you? I sang recently for somebody. Did I sing for you? ऐसे भी कई चीजें हैं जो दिखती ना महसूस हम करते, रोशनी मिट जाती जैसे बिजली जाए, अंधकार हो जैसे, बिजली को कोई देख ना सकता, शंका पर कोई न करता, तुझ पे लोग क्यों शंका करते, तुझ पे लोग क्यों शंका करते, तू ना हो तो मर जाते सब, सर झुका के मैं जीता, तू कहाँ है, तू कैसा है, ये सवाल करते हैं ना, जग ये माने या न माने, तू तो है जानू मैं ना. Oh Lord, I know you exist. Nobody doubts electricity. You experience electricity. Do you go put your hand inside the electricity? No, do you go sir, put this I heard it. Sir, no. अभी God का भी the SIP का power we completely we believe, we understand, we महसूस करता है. हमारा presence, भगवान का presence we experience. What you don't understand, what you don't realize. Kailash Kher ka, it was spellbound session. You had sung this song. It was just finished watching that, listening to that. No words. What you don't understand. Kailash Kher was good session. Okay. What you don't understand. Huh? Song, no, you sang the same song. Which song? This song with, yeah. And sir, this we experience, महसूस तो करता है. लेकिन when you said, so all this while I was thinking it is a divine experience. But now when you said it is not, realization is not. Every time I understand there is somebody protecting Krishna, me. Realization is beyond experiencing. You experience the wind and you feel it is God. You experience sunshine and you feel it is God. When you realize, you know, you understand, you believe, you don't, that it is you realize. The ultimate word is no other word. You realize that is God. Sun is not shining, sip is shining. Wind is not blowing, sip is blowing. When I was not air. Last question to you. Because you have realized, how do you see all of us? How do you see the world? How do you see everything? I see you guys. I see you as Krishna, not as Krishna. I see all of you as manifestations of the divine. Every day I come here and say, Sip Krishna, Sip Rutanu, Sip Komal Bhai, for show, for drama.
I realize SIP in you. I don't think SIP is in you. I don't presume SIP is in you. I don't believe SIP is in you. I have realized SIP is in you. So what I told Kailash Kher in this, he said, na, इश्क जुन इश्क जुन इश्क जुन इश्क जुनून हद से जो बढ़ जाए. He said his ishq, what I told him. प्रीतम में जिसे रब मिले इश्क वो है. प्रीतम में जिसे रब मिले इश्क वो है. प्रीतम फिर प्रीतम नहीं है देवी है. रब से जो प्यार पल पल करता है. प्रीतम में वो प्रेमी रब को पाता है. प्रेमी फिर प्रेमी ना, प्रेमी तो देवी है. देवी मंदिर में ना, देवी प्रेमी में है. प्रेमी में जो प्रभु पाता वो ही प्यार करता. और कोई प्यार प्यार नहीं है. अनुभूति. What he said, Kailash Kher, when I said अनुभूति, what he said? He said, साहब आपको तो अनुभूति हो गया साहब. He told her no. He said, साहब आप तो आनंदित है, आपको तो अनुभूति हो गया. He told her not. Why you don't have that अनुभूति? When I see even shaitan, I see divine. I see Bhagwan. You see Bhagwan, but you see shaitan in that. How we find fault? We find fault in our beloved. How we find fault? If you see SIP, then you will not find fault. If you don't see SIP, then you will slip. So this is all I'm teaching you all. I'm not teaching you all some crap. I'm not teaching you some lies. I am teaching you authentic truth about life. Authentic yoga. Authentic. Or you go to anywhere in America, there's a yoga. Come on, everybody. Now we will start the yoga. Sit in erect position, spine erect. Now, come on. This is yoga. This is not yoga. चलो अपने बाएं हाथ से अभी एक नाक बंद करो. अभी सांस लो. सांस लो. अंदर लो. अभी सांस बाहर करो. This is yoga. This is not yoga. This is asana. This is pranayama. This is not yoga. Okay. God, I hope you got it. But come back. We have more questions today, I'm sure. Komal, Krishan, Dr. Krishan, Aham Sip, Keshav. Keshav is new, I think. Komal. Yeah, namaste. Shivoham, Namaste. everybody. Yes. Yeah, yesterday we were talking about prarabdha karma and agami karma. Like prarabdha, we need to surrender, we need to accept without protest, and agami, we need to surrender and as an instrument of God. Then what is this sanchit karma? There is one more word it comes like sanchit. Okay, What to listen, do Kesh. about it and what it is? The third karma is sanchita karma. What is it and how? Now, actually, people are very confused. How this, that if you want clarification, I'll give you. Right now, I'm only answering your question. Sanchita karma, when you die, you have a balanced karma. Yes. Where does that karma go? It goes into it goes into an account. It goes into a warehouse. Your closing account of karma goes and merges with many janmas karma. So You that might is have been prarabdha only. No, you might have been Raju. You might have Raju, then you had karma. You might have been Muniswami, then Muniswami's karma. No, Raju's karma, Muniswami's karma, Komal karma. At the end of every life, it gets accumulated in a Sanchita karma. From that Sanchita karma, some part comes as Prarabdha karma in your birth. Oh. But some people ask the question, what is the proof that it is there? Can you answer? No. So if it was only human beings, then there is no proof that Sanchita karma exists. But sometimes if we are born as a dog, we don't do any karma. Some portion of our Sanchita karma comes into our Prarabdha karma. Some portion. Then the dog dies. Then the dog goes back to the Sanchita karma and comes back with a new Prarabdha karma. That is the understanding you must have. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Krishan. Dr. Krishan. Shivam Guruji, Sir. is it
possible that only thoughts which are coming in my mind, which I need, which I want, What? ऐसा हो सकता है क्या? मैं जो चाहता हूँ वही थॉट्स मेरे अंदर आए? नहीं हो सकता है, नहीं हो। आप 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 ये कर सकते हैं कि जितना समय आपको सांस लेना है उतना ही समय आप सांस ले सकते हैं परमानेंटली? नो, नहीं। जब आप सोएंगे तो आपको सांस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। नो। You may breathe every 3 seconds, every 4 seconds, every 5 seconds. See, some things are karmic. Aapke thoughts, we did a session, it's called thoughts are karma. What is the meaning thoughts are karma? The thoughts that are coming to you are karmic. The thoughts that is coming into your life are because of karma. And you can't control it. It's your karma. Uske liye thought aa raha hai. Okay, But mean you can react. Prarabdha? prarabdha karma, which is bring as a thoughts. Correct. And Even agami karma. No, even agami karma. Prarabdha karma and agami karma become like two, Alaknanda and Bhagirathi, two rivers. They come and become Ganga. The two Okay. tributaries come and become Ganga. Alaknanda, Bhagirathi. एक बार गंगा हो गया, आपका प्रारब्ध कर्मा आगामी कर्मा एक हो जाता है. Only be in consciousness is in my hand. Being in consciousness is in your hand. When the thought comes, उस thought को गोली मारना is in your hand. उस thought को नेप से पेप करना is in your hand. उस thought को intellect द्वारा बंदूक से मार देना is in your hand. Okay, that's great, sir. Thank you. अरे बहुत आप सब कुछ आपके हाथ में है. जो आप करना चाहते हैं आप करो. Got it, sir. Got it. Thank you. Like you don't feel that we are helpless. We are not helpless. We have, अगर if we are in consciousness, जान है जहान है. But वो हम consciousness में रहना है ना. अगर consciousness में नहीं रहेंगे, ना जान है ना जहान है. हाँ? क्या? मेरी जान मेरा जहान. उसका मतलब क्या? मेरी जान मेरा जहान. मेरी जान मेरा जहान means we have to be in consciousness. Okay. अहम से. Okay. अहम से. Yes. Shivoham Guruji and all others on the call. Guruji, many a times we have discussed about success, achievement, etc. And we have discussed that we teach our children that we have to succeed in life, we have to get higher positions, higher ranks, etc. Now, for us, because most of us in this call are have passed that age, our children are grown up, so it's easy for us to say yes. But for them, for the parents whose children are still studying, I mean, for them, how can they not tell their children that you have to work hard to succeed, you have to get good marks, because today's world is a word of competition. If you tell your children you have to work hard to succeed, if you tell your children you are the biggest enemy of your children. If you're teaching your children the lies that God lives in the skies, you are the biggest enemy of your children. If you're telling your children success is happiness, you are telling lies to your children. But they See, need to succeed. सुनो, the truth is the truth. आपको बच्चे को ये बताना है कि you do well, you learn, you earn, but one day you will burn and you will return. Make the child understand the reality of life. It is your job to tell the child the truth. It is the job of the child to learn what he wants to learn and do what he wants to do. You don't program the child with lies. Now, you don't teach the child success karo, achievement karo, come first. Why? I'm asking you one question. You tell me, you as a mother of a young child, why your child should come first in class? You tell me. Why your child should become a millionaire? You tell me. Why? Because in today's world, I mean, for getting admission, etc., you need good ranks, Why you need good marks. admission? Why you need admission? पढ़ना लिखना तो है ना बच्चों को. अरे पढ़ना लिखना है तो वो ही कर. You don't need Harvard ना. You don't need only Harvard and Oxford ना. See, try to understand. If you want to follow the herd, then you follow the herd.
If your child has to go to Harvard or Oxford, even learning spirituality and being in consciousness, your child can go. But what are you telling me that all the Oxford and Harvard children are going to get anubhuti, are going to get liberation, are going to achieve the ultimate goal of life? Then No. what is the big deal? What do we, so let's answer the question. What do we want of our children? Do we want our children to be in a rat race, and do we want them to suffer, and do we want them to just become rich and die? What do we want our children? What do we want of our children? Let's be clear. क्या हम बच्चों से हमारे बच्चा, you want your child just to be another machine? Then what have you learned? Am I saying your child should be a beggar? Now I'm asking you another question. Am I saying your child should be a beggar? Your child should be a buddhu? Am I saying all that? Teach your child how to have noteworthy success. Teach your child to earn enough to support him and his family. Teach your child to be in consciousness. Teach your child to activate intellect. Teach your child the truth. Then let your child grow up and grow up and grow up, and then decide what is good for you, for him or her. अगर आप अपने बच्चे को पूरा झूठ सिखा दिया, तो आपने क्या किया? If you taught your child all the lies, then what have you done? Ahimsip. What have you done? If you have brainwashed your child, what have you done? Done something very wrong with him. You have deprived your child of making an independent decision when the child grows up. Every child has the right. Every child has the right to know A, B, C, D. Every child has the right to decide what he should do, she should do. A child must be told A, B, C, D. You decide what you want. A child must not be brainwashed. This, I hope, is your question, and I hope you got the answer. Thank you. Thank you. Keshav, who's Keshav? Let a newcomer. Keshav. है केशव और शिवम गुरुजी सोहम बोलो केशव गुरुजी is the life already written? क्या हुआ? क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? हाँ सब कुछ लिखा है. मतलब ऐसा लिखा. आप कहाँ, आप कभी कहाँ है? मैं एक्चुअली था घर पे ही, अब थोड़ा बाहर निकल आया. नहीं, कौन से शहर पे है? दिल्ली. अभी लिखा है आप छोले भटूरे खाएंगे, तो आपको छोले भटूरे ही खाना है. अभी लिखा है आप 2 जामुन खाएंगे, तो अभी आपको जामुन ही खाना है. अभी लिखा है कि कोई आके आपके आपको 2 झापड़ देगा, तो वही लिखा है. ऐसा है, या आप चुन सकते हैं जो भी आप खाएंगे, जो भी आप करेंगे? चुन सकते हैं. फिर आपने जवाब दिया. केशव 2 बात है. एक, जो हमारे कर्म हैं उसके हिसाब से जो भी होना है वो होगा. वो दैट इज रिटन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन जो आप अभी करना चाहते हैं आप चुन सकते हैं. Did you understand what I said? जी. There are 2 things. One thing is already written, you cannot change, it will happen. Just like you're driving a car. Suppose आप दिल्ली में जाते हैं, आप रोड बदला सकते हैं? रोड नहीं, लेकिन गाड़ी आप फास्ट और स्लो गाड़ी चला सकते हैं आप? जी. लेफ्ट एंड राइट जा सकते हैं? जी. फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकते हैं? यस. रोड नहीं बदला सकते, लेकिन गाड़ी चला सकते हैं. So means majority is written, main things are written, few things we can change. No, some things are written, some things we can change, not majority. ऐसे मत सोचो. जो आपके पिछले कर्म हैं, जो आपने ऑलरेडी किए हैं, वो तो होगा ही होगा. आपने किसी को चोरी किया तो आपकी जिंदगी में कोई आपसे चोरी करेगा. आपने जिंदगी में कुछ अच्छा सेवा किया तो आपको अच्छा होगा. जो आपने किया, जो आपने बीज बोया है, वो फल जरूर मिलेगा. अग्रीड? ओके. लेकिन जो आपने अभी बीज नहीं बोया है वो आप अभी बो सकते हैं. तो उसका अगले जन्म में मिलेगा? नहीं, कल भी मिल सकता है. इट डिपेंड्स. वो कर्म के हिसाब से अनफोल्ड होगा. ओके. मतलब एक्चुअली, मतलब गुरुजी, मतलब जैसे इफ आई वांट टू अचीव समथिंग, तो कितना टाइम अच्छे कर्म करने पड़ेंगे कि उसका रिजल्ट मिले? इट डिपेंड्स.
क्या हर बीज, अगर मुझे चावल चाहिए, मुझे कोकोनट चाहिए, मुझे जैक फ्रूट चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए, हर बीज का सेम टाइम है, अलग अलग टाइम है? अलग अलग टाइम है। अलग अलग टाइम है, हर कर्म का अलग टाइम है। तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि नहीं पता मतलब लगेगा, पता ही, ओके, सपोज मैं आपको पूछता हूँ, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ाई करी, क्लियर किया, सेकंड में आए, सेकंड पढ़ा, थर्ड में आए, इस स्पिरिचुअल जर्नी में तो कुछ पता ही नहीं लगता ना नहीं सब कितना पता आगे। नहीं। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ट्री पर सेब है, तो आप बता सकते हैं हमने क्या बीज बोया है? एप्पल या मैंगो या ऑरेंज? एप्पल। क्यों बोल रहे हैं आप, कैसे पता है आपको? एप्पल देखकर। एप्पल तो ये आप जान सकते हैं कि जिंदगी में जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बट उसे चेंज कैसे किया जाएगा? प्रारब्ध तो वी कैन नॉट चेंज, गुड डीड्स नहीं वी आर लेकिन डूइंग, बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। एंड इफ यू जो सी, एप्पल, वो नेक्स्ट लाइफ जो, में मिलेगा तो ना हमें पास्ट लाइफ हमने कभी देखी है ना फ्यूचर लाइफ हम कभी देखेंगे। अरे थोड़ा धीरे चलो यार, धीरे चलो। अभी जो एप्पल आपने बोए हैं वो ट्री, सेब के पेड़ पे सेब ही आएंगे। आपको ऑरेंज चाहिए तो बो सकते हैं कि नहीं बो सकते हैं? हाँ बट पता नहीं ना इस लाइफ में मिलेगा या नेक्स्ट लाइफ। नेक्स्ट लाइफ तो किसने देखी है, और पास्ट लाइफ का भी कुछ याद नहीं है। हाँ, तो ये कॉल में कैसे आए आप? इस कॉल पे किसने लाया? आप इस कॉल पे पहली बार आ रहे हैं? नहीं, एक पहले आया था गुरुजी, बट थोड़ा जॉब की वजह से टाइमिंग नहीं मैच हो रही थी हाँ, तो नहीं सुन पाया था। इस मतलब कॉल अब पे दोबारा आएंगे, कंटिन्यू किया। इस कॉल पे आएंगे, सब समझ में आ जाएगा। इस कॉल में 100 लोग हैं, सब 100 लोगों को सब बात समझ में आता है। आप कॉल पे डेली आओ बस। ठीक है। इस जमाने में कैसे सुख पाना है, कैसे मुक्ति पाना है, कैसे मोक्ष पाना है, सक्सेस क्या है, खुशी क्या है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है गुरुजी। बट कम ऑन द कॉल रेगुलरली। ओके गुरुजी, थैंक, प्लीज गिव योर थैंक, ब्लेसिंग्स। अरे ब्लेसिंग्स आपके अंदर ही प्रभु बैठे हैं, आपके अंदर ब्लेसिंग है। अंदर जाओ, अंदर जाओ, आपको ब्लेसिंग, आपके अंदर ही ब्लेसिंग पूरा भरा है। ओके, कैसे कैसे जाए गुरुजी अंदर? अंदर। हाँ जी। सपोज आई एम आस्किंग यू कि एक पंछी है, हाँ जी। वो पंछी बाहर घूमना चाहता है, हाँ जी। हमने सब डोर और विंडो बंद कर दिए, हाँ जी। तो फिर पंछी कहाँ जाएगा? अंदर। अंदर जाएगा। आपके पूरे डोर विंडो खुले हैं, आपकी आंखें खुले हैं, आपके कान खुले हैं, आपके नाक खुला है, आपका मुंह खुला है, पूरा बाहर जा रहा है। जी। सब कुछ बंद करो, मतलब बंद करना मतलब ये नहीं कि सब, ट्राई टू टेम योर सेंसेस। इंद्रियों को शांत करो, मन को शांत करो। ये जी। इंद्रिय और मन बाहर जा रहे हैं, इनको जी। शांत करेंगे तो हम अंदर जा सकते हैं। जी। थैंक यू केशव, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू कमर। थैंक यू केशव। राज, थैंक यू गुरुजी। राज, शिवोहम ईशा, गुरुजी। शिवोहम। मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफ में आपको अपरोक्ष अनुभूति कब और कैसे हुई थी? और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मैं अभी 21 ईयर ओल्ड हूँ, तो मैं अपने लिए राइट करियर कैसे चूज कर सकता हूँ जो सेल्फ रियलाइजेशन में मुझे हेल्प करे? ये दो तो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मुझे अनुभूति हुई, स्पार्क हुआ 31 अगस्त 2014। 2014 31 अगस्त, 10 साल हुए, ठीक है। मैं मैं एक तलाश में गया, वो तलाश में मालूम पड़ा कि आपने बोला आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आपने बोला यस। ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है, बिकॉज यू आर नॉट 21 ईयर्स ओल्ड, योर बॉडी इज 21 ईयर्स ओल्ड। यस। यस। आप जो है, आप आत्मा है, आप 9 महीने पहले आए, आपके बर्थडे थे ना, वो जो सर्टिफिकेट लिखा है वो फालतू है। यू आर बॉर्न एक्चुअली 9 मंथ्स बिफोर। हाँ। अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, अप्रोक्ष अनुभूति चाहिए, प्रभु चाहिए, खुशी चाहिए, मकसद चाहिए, आपको जिंदगी का सही आपको जीना है, तो वॉट एवर कैरियर यू चूज, इट डजेंट मैटर, ओके। मेक दिस अ प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। ओके। क्या क्या प्रायोरिटी बनाएंगे आप आपके लाइफ के? सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभु पाना यही मकसद है, प्रभु को पाना है, प्रभु को पाना है। हमारे राजी को दुख हो जाता है अगर मैं मरने से पहले बोलता हूँ तो। हाँ, प्रभु, शी सिंग्स ओनली वन सॉन्ग, व्हाट शी सिंग्स, राज, हमारी राज, यू आर राज, शी इज राजी। और राजी क्या गाती है? प्रभु पाना यही मकसद है, प्रभु को पाना है,
प्रभु को पाना है, सब कुछ मिला, अगर प्रभु ना मिला तो संसार मिला, फिर भी कुछ ना हम पाते। अगर पूरा संसार मिल गया राज, क्या करेगा? कोई फायदा नहीं है अगर खुशी नहीं है लाइफ में। खुशी नहीं, और जो भी तुम्हारा है, लगता है तुम्हारा है, क्या तुम्हारा है? गीता सार में नहीं क्या लिखा है? तुम्हारा क्या है जो तुम यहाँ पे लेके आए? कुछ लेके आए? नहीं कुछ नहीं। तो तुम्हारा क्या है जो तुम यहाँ से ले जाओगे? ले जाओगे? नहीं कुछ नहीं। हाँ? जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपने उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने, इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है फंस के इस झमेले में, आज तक के देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा वो सदा ही रोता है, जिंदगी को ना समझा वो सदा ही रोता है। हाँ? तो Yes. हमें 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 सच का एहसास करना है। हमें सच का एहसास करना है कि सिकंदर, वर्ल्ड्स कॉन्कर, वो भी गया तो दोनों हाथ खाली थे। Yes. ओके, गुड। वी हैव गॉट रूतनु, रूतनु, Thank you, sir. दिशा, विवेक, रूतनु, दिशा, विवेक। Shivoham Guruji. Guruji, Guruji, when free will is there with us, then prarabdha karma does not come in between free will. Prarabdha karma will come. If you are in the mind state, then you will not use free will. Then you will be like a bakri, bakra, bakra. Meh, meh, you just follow. Nah, if you use free will, you'll say, bhaad mein jao. If you use free will, you'll say, bhaad mein jao tu. Why bhaad mein jao? Because you have chosen, you have decided to choose what is right. The intellect makes you decide this is black, this is white, this is wrong, this is right. Prarabdha karma is there. You have to fly over it. And that's why we have got a willpower. That's why we've got an intellect. But we are slaves. We are slave of the body, mind, ego. Because we are slaves, we are doing wrong things. We are doing wrong things. We are unhappy. We have momentary happiness, ephemeral happiness, moment, maza. After maza, saza. First thoda maza, then bahut saza. Then again maza. Leela hai. No, so if you want to be in bliss, if you want to have that state of eternal happiness, then you have to reach that. You have to reach that state of Anand, Ananda. One more thing, Guruji. Guruji, whatever we do in this karma, suppose we don't get punishment in this karma only, but in next karma we are innocent. Next turn we are innocent. Then we'll get the punishment for this karma. Then how we will realize that we did something wrong? You will not realize, you will suffer. How many people are suffering in today's world? They're saying, Prabhu, kyun Prabhu? Prabhu, why I am suffering, Prabhu? Why I got cancer, Prabhu? Why my husband is hitting me with a lathi, Prabhu? Why my son is kicking me, Prabhu? Oh, people are suffering from all angles. Why? Suffering is not a subject of suffering. New quote I'm getting now. Suffering is not a subject of mystery. क्या बोला मैंने? Suffering is not a subject of mystery. Suffering is because of your history. Got Yes. it? Yes, Suffering is not a subject of mystery. Suffering is a clear and clear unfolding of history. But Guruji, pain is inevitable, but suffering is a choice. Suffering is Choice. Choice. Okay. Disha. Yes. Thank you. Disha and Vivek. मतलब ये मुरुमाता जी, पेन तो होगा, दांत में दर्द होगा, लेकिन क्या हम उस दर्द से मरेंगे नहीं मरेंगे वो हमारे ऊपर है. Be careful of that. Okay, Disha. I thought it's Manjax. Disha and then Vivek. Shivam Guruji. Yes. Sir, I have a doubt actually.
Yes. I'm a student. And sometimes I feel like I'm the youngest one in this call. I have this question in my mind always that am I too young for this call? Because How old are it you? should, How old is your I'm body? just 21. 21. Yes, We have people on this call who are 16 and 18 also. I was not known of this. And in the call today also, there are one or two boys are there who are 21 years also. Okay. Yeah. Okay. So what is your question? Are you too young? Yes, for this columns of tough terms, I find sometimes I'm trying my best to understand. So Disha, please ask questions. And on Wednesdays, it's a beginner session. You can ask Yeah. 10 questions on Wednesday, and even on everyday basis. Let me Yeah, tell you one thing. Yeah. Anybody who is over 13, 14, 15 years is capable of understanding what I'm talking. You know the meaning of God. You know the Yeah. meaning of success. You know the meaning of happiness. You know the meaning of pain. You know the meaning of life, and you know the meaning of death. All this meaning you know, right? Yes, definitely, sir. You know that what I'm talking is it confusing to you, or you know that what is life and what is death? You know, death means person is No. dead. You realize that, Yes, sir. and you know the meaning of God. Yes. So this in this call we explain all this. Who is God? Is God शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है, प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है, आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है. I hope you understand Hindi. I'm singing. You understand Hindi? Yes, sir. तो जो भी मैंने बोला अभी आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? हाँ जी सर, समझ आता है. बस मतलब you are ready. You can graduate in this class. Yeah, sir. Sir, I have question also. बोलो, question पूछो. This is about getting irritated instantly. I try not to get irritated or get angry about to my parents or my friends or my near and dearest, but ended up being irritated only. I try my best, sir, कि मैं अच्छा response दूं. Whatever they are doing, वो चाहे मुझे खराब बोले, अच्छा बोले, कुछ, but सुनो. मैं irritate हो जाती हूँ, sir. So let me tell you I'm going to give you one answer to this question of yours. Yeah. They say when you have an argument, Yes. if you lose the argument, you lose. Yes. And you win the argument, you lose a relationship. Yeah. So if you're having an argument, whether you win or you lose, both the ways you lose. Yeah. आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, अगर आप जीतते भी आप हारते हैं, बिकॉज उसको दुखी करा दिया आपने. तो दिशा, there are some simple methods. जब you know your father or mother is irritating you, अभी you know you're going to get upset. You already know, correct? आपको मतलब आपके अंदर आग बढ़ रही है, ऐसा मालूम होता नहीं होता है? Yes. अपने मुंह में पानी डाल दो. Put water in your mouth. And don't open your mouth. Learn some simple things. Burn anger before anger burns you. Eliminate irritation before the irritation eliminates you. ये ना पता है आपको, आपके पास दिशा, one of my friends, I told one thing. I asked my friend, she did not know this. I asked my friend, how many teeth you have got? कितने दांत है आपके पास? कितने दांत है? Supposed to be 32. My friend had a very a snake inside the 32 teeth. एक बार आवाज निकल गया, फिर तो गया ना, वो तो आवाज निकल गया, अभी जुबान से कुछ निकल गया तो फिर रिग्रेट करने का मतलब. Yes. That's why God gave 32 doors, not 2 or 4. Can you clench your teeth like this? Try to speak with you. You cannot get irritated unless you open your mouth. खोलो ही मत अपना मुंह. जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, when you know अभी शैतान आ रहा है, शैतान बढ़ रहा है, शैतान बढ़ रहा है. I'll try not to speak. Because every time you get irritated, you're creating more trouble for yourself. You're creating problem for yourself. Don't want to create, and no wise person will create problem for themselves. You are a wise person, don't create problem. Vivek,
विवेक, नमस्कार सर। नमस्कार। ब्लेस्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मैं आपसे मिल चुका हूँ ऑफलाइन, आपके वाइब को महसूस किया बूस्ट योर बिजनेस नई देसाई जी के इवेंट में। और मेरे मन में ये सवाल चलता रहता है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरी जो वाइब्स हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हाइप में है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-4 घंटे ध्यान में ही बैठा रहूँ और जो मेरी स्टेट है, पूरी बॉडी एकदम से वाइब्रेट करने लग जाती है। और कहीं न कहीं मेरा जो एक बचपन से जो मुझे लगता है कि मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि मैं 2 चीज़ों के बीच अटक जाता हूँ कि मुझे स्पिरिचुअल सक्सेस जो कि मेरी अंदर से है, क्योंकि आप बताते हैं कि हम वही हैं, और एक है मटेरियल सक्सेस जो कि मुझे पाना है। तो कैसे मैं इन दोनों का बैलेंस बनाते हुए अपनी लाइफ में वो मटेरियल सक्सेस हासिल करूँ? क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ कि सर मैं तो अगर अकेला बैठ जाऊँ तो मैं अपने आप में खुश हूँ बहुत ज़्यादा। दुनिया की कोई चीज़ आप भी बताता है कि हमें खुश नहीं कर सकती, बिकॉज़ हैप्पीनेस इज़ इनसाइड अस। बट क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स एंड द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी, एंड इट्स माय ड्यूटी to do something for them. So how to balance in both of them? सी विवेक, जिंदगी एक ही है। वो जिंदगी में यू हैव टू निट, जैसे एक स्वेटर में हम पिक्चर बनाते हैं। पूरे स्वेटर में रेड थ्रेड है, व्हाइट थ्रेड है, ब्लू थ्रेड है, सब थ्रेड है, लेकिन हम वीव करते हैं, वी वीव अ पिक्चर इन आवर ड्रेस। ठीक है, आपको अभी फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा तो काम करना है, खाने पीने के लिए आपको थोड़ा काम करना है, लेकिन आपको मटेरियल सक्सेस अगर बहुत होगा, बहुत होगा, बहुत कमाएंगे, क्या करेंगे? यू बिकम अंबानी, यू बिकम अदानी। अभी मुकेश अंबानी के बाप थे धीरूभाई अंबानी, वो क्या ले गए आपके साथ? उसके अपने साथ में क्या ले गए? Nothing. दो यूज योर इंटेलिजेंस, use your intelligence to find out what is the purpose of life. The purpose of life is not just to make monetary wealth. The purpose of life is not only money, because the story of money is very funny. You can't take with you even a penny. एक पैसा भी नहीं जाएगा, एक पैसा भी नहीं जाएगा साथ। ये हम भूल जाते हैं। हम अविद्या में जीते हैं, हम अविद्या में जीते हैं, हम भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। But sir, as people says, और this is also reality, कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम ज़्यादा लोगों की मदद भी कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की मदद क्यों करनी है? आपको लोगों की मदद करनी है, अपनी मदद करनी है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी हेल्प करे। हाँ, लोग सुनिए, जो लोग सफर कर रहे हैं वो अपने कर्म के हिसाब से सफर कर रहे हैं। अगर हम उनको मदद कर सकते हैं, इफ वी कैन हेल्प देम, वी शुड हेल्प देम, प्लीज हेल्प देम, बट दैट शुड नॉट बी मोर इंपॉर्टेंट देन योर रियलाइजेशन, योर लिबरेशन। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। गॉड हैज नॉट मेड यू टू हेल्प अदर्स। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर एवरीबडी ऑन द कॉल। इज गॉड इनकेपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स? Never. Is God incapable of helping others? No. क्या गॉड इतने कमजोर है, इतने बेवकूफ है, वो सबको संभाल नहीं सकते हैं? सबको संभाल सकते हैं। हाँ, तुम भगवान का काम मत करो, तुम भगवान बनो। और सर मेरा एक और सवाल है कि जैसे मेरे अंदर जो वाइब्स रहती है नेचुरली स्पिरिचुअल, तो मेरा कहीं ना कहीं मन होता है कि मैं इस चीज के लिए अपना योगदान दूं और लोगों को भी ये महसूस हो कि असली खुशी ये है। तो मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूशन दूं, बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, जिस भी लेवल से हो, जिससे लोग जैसे मैं कहीं ना कहीं मुझे वो हैप्पीनेस तो इंसाइडिंग आती है। कंट्रीब्यूशन ये आप कर सकते हैं पहले, जब व्हेन यू कमिट योर लाइफ टू दैट नाउ। पहले तो आप अभी कंफ्यूजन में है, अभी आप बोल रहे हैं मैं कैसे बैलेंस करूं, ये बैलेंस करूं, वो बैलेंस करूं, तो कैसे अपनी जिंदगी को डेडिकेट करेंगे आप? अगर आप, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू हैव टू बिकम Atma, soul, Ruh. You have to become the Ruh, the soul. Then you can change the world. अगर आप ही डिंग डोंग बेल, आप ऐसे आप गोइंग अप एंड डाउन, फिर हाउ यू विल चेंज द वर्ल्ड? पहले यू कमिट टू दिस जर्नी.
you get anubhuti, you get self-realization, you get God realization, then you can commit your life to transforming people's life. पहले आपको आनी चाहिए. Okay, thank you. Raj, Rutanu, Will. We will end with this. Will be the last. Raj, Rutanu and Will. गुरुजी, भगवत गीता में बहुत से प्रकार के योग बताए गए हैं, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और प्रेम योग जो आप बात करते हैं. तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ज्ञान योग को लेके है. ज्ञान योग क्या होता है और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, ये क्वेश्चन है. और एक क्वेश्चन और है, अविद्या और विद्या में क्या डिफरेंस होता है? अविद्या और विद्या में डिफरेंस ये है, the difference between ignorance and wisdom, झूठ और सत्य. अविद्या में हम झूठ को मानते हैं, विद्या में हम सच का एहसास करते हैं. That is the difference between avidya and vidya. Avidya ko hum, we follow the lies. But in vidya, no, we don't follow the lies. ठीक है? और आपका पहला क्वेश्चन था, आप योग के बारे में आपने क्या बोला? योग क्या है? ज्ञान योग क्या है? ध्यान और ज्ञान. ज्ञान. तो प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, योग का मतलब है योगी जो योग में सदा ही रहे, प्रभु के योग में रहे. योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का योग. गॉट इट? हाँ. अगर हम ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान योग नहीं. वो ध्यान से अगर हमारा योग होता है तो ध्यान योग बनता है. अगर हम कुछ ज्ञान पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान है. अगर ज्ञान द्वारा प्रभु का योग होता है तो ज्ञान योग होता है. अब सपोज इस कॉल में आपको लगता है कि हम प्रभु से मेरा कनेक्शन होता है, फिर वो हो जाता है ज्ञान योग. जो अभी प्रेम है, प्रेम सिर्फ प्रेम है, लेकिन प्रेम द्वारा अगर प्रभु का योग हो जाता है, फिर वो प्रेम योग बन जाता है. तो ज्ञान योग का प्रोसेस क्या है? हम ज्ञान योग के थ्रू कैसे जान सकते? सपोज यू आर इन दिस कॉल, ये सिर्फ ज्ञान का कॉल है, लेकिन इस कॉल में कई लोग ऐसे बैठे हैं कि ये ज्ञान से वो प्रभु से एक नाता बना देते हैं. जैसे सिम कार्ड सैटेलाइट से एक कनेक्शन रहता है. कई लोग इस कॉल पे हैं, चुपचाप बैठे हैं. यू विल सी मेनी पीपल हु आर इन दिस कॉल, दे कॉल पे आते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं, लेकिन वो योग में रहते हैं. कैसे योग में रहते हैं? सुनते हैं और इसी बात से प्रभु से कनेक्शन बना के रखते हैं. बस you will find many people, Raji, Vanita, Girish, Ashok Chotwani, Shai, many people, they are just listening in Jnana Yoga. Yes. कुछ सवाल ना भी पूछे या योग है. कई लोग ऐसे नहीं, 20, 25, 30, मैं नाम सबका नहीं बोल सकता हूँ. They are in yoga, ज्ञान yoga. Okay. Thank you. Rutanu and Will. Last. Shivom, Guruji. Yes, Guruji, if the child wants to do something and we think that something else will be more constructive or more returns will be there for the child, then we should give the direction to the child, or we should let the child do what the child wants to do. A child does not have full discrimination till a child becomes an adult. Therefore, the parent is responsible to help the child make a decision till the child is capable of making their own decision. So you have to be able to administrator, let Will speak as a newcomer, Vijay Pratap, give him a chance to ask question. So you have to help Rutanu, you have to help the child discriminate till he reaches the age of discrimination, or she reaches. Yes, Guruji. Thank you. Guruji, when we'll be having seminar or any workshop? That depends on you, whenever you want to. When you are available, Guruji. And we can plan. You all make just tomorrow's call, you tell me, we'll plan. Now it's end of the call. Abhi call khatam ho gaya. Will and Vijay Pratap. Will, thank you. I think Vijay Pratap is new to the call, so we will ask his question last. Will, and then Vijay Pratap. Shivohang, Gurudev, thank you for taking the call. I wanted to, many religions, they talk about the light and the dark. You see this theme in the Christian religion, you see it in Buddhism, I think you see it in Hinduism, the light and the dark, the light versus the dark. It underlies all
all our little lives. It underlies religion, and I think also underlies spirituality. You have the forces of light and the fast forces of dark. I wonder if you also is that something that you're conscious of? Actually, Will, it's just a natural analogy, because in the light there is not just light, there is sunshine, there is growth, there is, so we have taken this from nature. And in the dark, sometimes we can't see, or we are unable to make the best of those moments. So the light and the dark have been used as an analogy. Now, light and dark is not created by you and me, it is created by SIP. SIP has created light and dark. And obviously, in the larger perspective, nobody wants to live in complete darkness, because again, you need light. Without, imagine you're living in the North Pole in winter and there Yeah. is no light, there's no light. You are living in UK. Imagine in the winter, there is no light, there is no heater, there is nothing. Can you survive? Yeah, no, I didn't really mean that. I meant dark. For example, the Muslims, they use this word shaitan, they use the word jinn. Yeah. The Christian religions, they Okay, have okay. their own words. So and you're talking about the divine and the devil. Is that what you're trying to talk about? Yeah, well, that's it. But there's Okay. a kind of malign, dark, dangerous forces. For example, yesterday you talked about acceptance, but it Yeah. seems to me that some of what goes on in the subconscious mind and also in this world is very dark, dangerous, spiritually, very dangerous forces and invisible. So my answer to you is this, Will. Suppose I go to a gold shop and I make a Jesus Christ out of gold, and then I make Saturn out of gold. So does it mean that the Jesus Christ is gold and the Saturn is not gold? Well, I don't know that God makes Satan. I think So- Satan is the opposite of God. So what I'm saying, this is all created by man. My answer to your question is everything is a manifestation of God. We have created evil. We have been in the state of mind. We have been in the state of lust. We have created desires and greed and passion. We have created Satan. We have created Satan. In reality, everything is SIP. Everything in this world is a manifestation of SIP. And we can continue this discussion later because now our time is over. There's a Vijay Pratap. Do you want to ask a question quickly? Vijay Pratap, is he there? Because he's new to the call. Please unmute Vijay Pratap quickly, 30 seconds. What do you want to ask Vijay Pratap? हेलो Hello? Yes, sir. बोलो. जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ, बोलिए. जी, मैं हिंदी में बात करना सर। सर, ये आत्मा के बारे में आप बता रहे हैं, मेरे को थोड़ा जानने का आत्मा के बारे में सर। आप पहली बार आ रहे हैं कि कॉल पे? जी सर, पहली बार सर। तो आज कॉल तो खत्म हो गया. एवरीडे 8 o'clock कॉल होता है. प्लीज ज्वाइन सेम लिंक एवरीडे. आत्मा का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सोल, SOUL, सोल. सोल मीन्स स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ. आत्मा एक शक्ति है, वो प्रभु की शक्ति है. वो प्रभु की शक्ति आपके अंदर है. और नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ. जी बोलिए. एक मिनट आपका समय लूंगा सर. ये आत्मा अजर अमर अविनाशी बॉडी में कहाँ पे सर? क्या आत्मा बॉडी में या आउट ऑफ बॉडी? जी, आवाज आ रही सर? आपके हर कण में आत्मा है. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आपके हर कण में आत्मा है. हेलो, कैन यू हियर? आपके कण में आत्मा है. हेलो, यस, कैन यू हियर? विजय प्रताप. बट ही इज नॉट एबल टू he is not able to hear. Vijay Pratap, सुनाई दे रहा है आपको? Okay. Vijay Pratap is new to the call. Okay, sometime when I get a newcomer, I know I'm gone beyond the time. I bow my hands and hopefully he will come tomorrow and we will explain Atma to him. Thank you. See you tomorrow at 8.